Hello friends, let's see how to create this design. So first we will make two circles, then in the next layer we will create circle with dots as I am creating right now. Then one more circle we need to add one more circle. So these all are the parallel circles, parallel round shapes that you need to practice with different thickness of line. Now apply this pattern on the last layer of the circle. जैसे कि आपने देखा कि पहले मैंने दो छोटे छोटे सर्कल्स क्रिएट किए, उसके बाद जो तीसरा सर्कल था वो मैंने डॉट्स से क्रिएट किया एंड उसके बाद अगेन दो सर्कल्स, देन आई क्रिएटेड दैट पैटर्न्स. अब जो है वो इसको मैं एंड अप और फिनिशिंग दे रही हूँ. तो उसके लिए मैंने ये थिक शेप्स क्रिएट किए हैं, छोटे छोटे लीफ शेप्स. नाउ जस्ट क्रिएट लीफ शेप इन one direction as I have created here. Now I will add this shape between each of these two consecutive leaves. It is a kind of 6 number. If you observe, then it is kind of 6, or we can also say that's wheels. Okay, now I am just making patterns. So again here I am using circle, then circle with dots. अब जो नेक्स्ट डिज़ाइन है तो वो हम सेम डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन उसके बीच में ये एकदम लाइट डिज़ाइन हम वर्क कर रहे हैं. नाउ जस्ट क्रिएट दिस स्मॉल लीफ ब्रांच शेप इन अ सर्कुलर वे. अब ये जो लीफ ब्रांच है वो हम एक सर्कल में क्रिएट करेंगे ताकि ये थोड़ा डिफरेंट लगे. Okay, now next again we will create the same circle that we have created in the first section. So we'll start with making two parallel circles, then circle with dots. So just continue in this way. अब जैसे ये दो सर्कल्स कंप्लीट हो, हमें नेक्स्ट पैटर्न ऐड करनी है एंड उसके बाद जैसे कि हमने फर्स्ट सर्कल में जैसे हमने लीफ एंड स्विल्स पैटर्न ऐड की थी, वैसे ही हम यहाँ पे भी इसको डेकोरेट करेंगे. Now just add leaf pattern in the direction, in the only one direction as I am creating. अब एक ही साइड पे एक ही डायरेक्शन में हमें ये सारे लीफ क्रिएट करने हैं एंड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम ये स्विल्स पैटर्न क्रिएट करेंगे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि अभी मैं बना रही हूँ. After doing this, just fill all this leaf shape. Then next again we will create the second pattern as we have created earlier. Two lines, one dotted line and at the end leaf branch in a circular way.
So just I am drawing this reference line. So create two parallel circles, then one we need for making dots. Now on this outer circle again redraw it, and again start making leaf branch in a circular way one by one. So just step by step create this leaf branch with a reference of that outer circle. Okay, now here next we will create again first pattern. This design is very simple because इसमें आपको सिर्फ दो ही पैटर्न याद रखनी है और ये दो पैटर्न से आप पूरा जो ब्राइडल डिज़ाइन होती है वो क्रिएट कर सकते हो इन अ गर्ल स्टाइल। पूरे हाथ पे या तो फिर फीट पे भी आप ये सेम पैटर्न अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ही हमें ऑल्टरनेटिवली वी नीड टू create the combination of these two patterns. Now again draw one-sided leaf pattern, then in the opposite direction add that swirls pattern. Now after finishing this, add second pattern or second element of this design. As this design we have created using two elements, or we can say two patterns, this first one and this one is the second one. So with a group of this all two elements we have created this design for full hand. Now only the remaining thing is fingers. So just in the fingers I will add some number of parallel lines. Then again create the leaf branch as we have created, and as we have applied this pattern in our second element. So just to correlate my design with fingers design, I am adding this element, that is leaf branch. Again in the last finger add number of parallel lines. Again we will add this leaf branch. Here I am creating leaf branch in a straight way, but in the second element we have created leaf branch in a circular way. So just finish this.